Hello and welcome back. So today we will discuss the about the one of the hot topic regarding to the drug discovery and development, that is the drug repositioning or the repurposing of the drugs. So this is the drug repurposing or the repositioning of the drugs. So first of all, हम इसको जो है discuss करते हैं that what is the definitions or what is the drug repurposing or the repositioning phenomena in the drug discoveries. And then we will proceed to some of the different aspects regarding the drug repositioning. So now let's proceed toward the outline of this lectures, that what would be discussed in this lectures. So these are the different content of the today lectures. That would be the definition of the drug repositioning. जिस तरह की आपने सुना होगा कि जो normal जो drug discoveries होती है वो approximately 10 to 15 years लेती है. इस तरह जो है there is billion of dollars जो उसकी require होती है for the manufacturing of the new drugs, क्योंकि वो जो है फिर जो different step by step procedure है उससे होकर जो है वो फिर जब मार्केट में रिलीज होती है तो वो a lot of the money and also a lot of the time जो है that is required for the production and manufacturing of the drugs. So the drug repositioning, that is one of the approaches to decrease such high amount as well as the time and prepare such the drugs in a very unique ways. So we will discuss the definition of the repositioning of the drugs. इसके अलावा जो है हम further कुछ purposes and benefits भी discuss करते हैं regarding the repositioning of the drugs. जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो एक ड्रग मार्केट में रिलीज होती है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 ईयर लेती है. इस तरह जो है बिलियन डॉलर जो है वो भी रिक्वायर होती है. तो उससे हटकर जो है हम अगर एक और एडवांस जो है मेथड वो अप्लाई करें और ड्रग को जो है जो ऑलरेडी मार्केटेड अप्रूव्ड ड्रग्स है, सपोज हाइपरटेंशन के लिए एक ड्रग अप्रूव हुई है जैसे कि मिनॉक्सिडिल है, वो हाइपरटेंशन के लिए इनिशियली जो है वो अप्रूव हुआ था, लेकिन later on it was used for the hair loss like the alopecia, that is the male pattern baldness. So and a lot of other example like the famous drug that is the Thalidomide, that in 1962 जो है उसने जो है एक big ट्रेजेडी कास्ट की थी, जिस तरह के फुकोमीलिया है जो कि मोशन सिकनेस के लिए जो है प्रेग्नेंट लेडीज में यूज होता था, लेकिन इनमें जो है उसकी जो एक मेजर सिम्टम्स है, एक मेजर प्रॉब्लम एरिया उसने खास की थी, दैट वाज द फुकोमीलिया, दैट इज द सो उसके बाद जो है उस वो ड्रग फिर करंटली जो है वो रिपर्पस हुई है फॉर दी वो मल्टीपल माइलोमास जो कि कैंसर का टाइप है, प्लाज्मा टाइप ऑफ कैंसर है, उसमें जो है करंटली वो यूज होता है. So we will discuss the some of the purposes and the benefits of the drug repositioning. इसके अलावा जो है the strategies and the approaches of the drug repositioning, that what should be the approaches, like the one of the approaches the on and off approach for the repositioning of the drugs. इसके अलावा जो है the most important one here हम यहाँ पर discuss करेंगे कि that some of the examples of the marketed approved drug and how they are repositioning for the and repurposed for the another additional therapeutic purposes. And then we will proceed toward the some of the name of the drugs that are currently under the clinical trial for the repositioning purposes. So these are the outlines of our current lecture, जिसमें जो हम discuss करेंगे first of all जिस तरह के एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, फिर जो है हम पर्पस एंड बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, फिर step by step the strategies and then the approaches, and then we will proceed toward the examples and then the some of the drugs that are currently in the market for the repositionings. So जिस तरह की in the introduction में अगर हम discuss करें that the process of the drug discovery involve many stages but can be categorized mainly in these three stages. इस तरह की आप सबको पता है कि एक ड्रग जब मार्केट में रिलीज होती है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज एक सोर्स है उससे ड्रग को अपटेंड करते हैं, सपोज देयर में भी आइदर दी नेचुरल सोर्स, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सोर्स. फिर उसके बाद जो है उसकी एक लीड आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन होती है, फिर एक कैंडिडेट ड्रग जो है हम प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद जो है
वो उसकी हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं एनिमल्स पर, और उसकी जो डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक्स जो प्रोफाइल्स है एडमी लाइक दैट वो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है हम आईएनडी एप्लीकेशन वो एफडीए में सबमिट करते हैं, और उसके बाद जो है हम उसकी ह्यूमन बीइंग्स में जो है उसकी ट्रायल्स करते हैं, जो कि फर्दर 3 फेजेस में कंसिस्ट होती है। और इसके बाद जो है फिर ड्रग मार्केट में रिलीज होती है, एंड देन again we will submit the another application to the FDA that is called the NDA, that is the new drug application to the FDA, and after approval from the FDA then we can release the drugs into the markets. So जिस तरह की यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि the process of the drug discovery जो है वो different stages लेती है, लेकिन हमने जो है यहाँ पर only 3 stages की जो है वो जो main 3 stages we highlight them only. So the first is the lead identification. Actually lead एक substance होता है, जिस तरह के multiple substance में जो है एक drugs का जो functional group होता है, या इस तरह की जो है कोई moieties होती है जो एक specific receptor से bind होकर जो है वो एक जो response है वो देता है। Suppose हम जो है hypertension है, that is one of the cardiovascular disease and most common. सो अगर हम जो है एक ड्रग जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उसकी जो है सपोज वो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि वो विजुअलाइजेशन करती है थ्रू the unknown ways, so that can be used for the hypertension. So the first approach is the first of all identify the leads, and then the next approach in the lead identification is the lead optimization that can be done through the bioinformatics techniques. Then the next approach is the preclinical testing in animals, फिर जो है हम ड्रग को जो है उसकी सेफ्टी, स्पेशली सेफ्टी जो है और टॉक्सिसिटी स्टडी करने के लिए हम जो है उसे एनिमल में स्टडी करते हैं, और उसके बाद जो है फिर जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि एम्स में आता है, फिर हम ह्यूमन बीइंग्स में जो है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि 3 फेजेस पर कंसिस्ट होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. So, in order to avoid such a long-term process of the conventional drug discovery, the alternative approach is the exploration of drugs that have already been approved, जो कि एक ड्रग है जो कि ऑलरेडी किसी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए जो है वो अप्रूव हो गया है, और हम जो है वो उसकी फर्दर रिपर्पसिंग करते हैं। तो अगर सिंपल मैनर में हम जो है डिस्कस करें कि एक ड्रग that what is repositioning of the drug, इसका सिंपल मीन ये है कि एक ड्रग सपोज वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑलरेडी मार्केट में अप्रूव हो चुका है, और हम फर्दर उसकी जो है कुछ इस तरह की स्टडीज करें कि वो हम जो है एक न्यू इंडिकेशन उसमें जो है ऐड करें। सपोज एक ड्रग हाइपरटेंशन के लिए यूज हो रही है, और हमने जो है उसकी कुछ इस तरह जो है कि वो स्टडी की कि अब हम उसे सपोज एलोपेशिया जो है जो कि हेयर लॉस है उसमें हम यूज कर सकते हैं। So that is the repurposing or the repositioning of the drug. Now the definition of the optional definition of the drug repurposing can be defined as a process of identification of new pharmacological indication from old or existing or failed or investigation or already marketed or FDA approved drugs, or even the fraud or the fraud drug, जिस तरह का एक concept है the fraud drug, and the जो कि initially जो है एड्रियन अल्बर्ट ने 1954 में यूज किया था, and the application of new so the simple meaning ये है कि the drug repositioning is actually the identification of the new pharmacological activity of the already approved drugs. The drug may be approved by the FDA, or that may be either the investigational drugs, or that may be either the different other regulatory bodies. Suppose the European Agency for the Evaluation of Medicine, they have approved the drugs, or suppose someone has approved the drug through the ICH guideline, that is the International Conference for the Harmonization. So this is the किसी भी थ्रू से जो है हम एक ड्रग को जो है वो मार्केट में जो है वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद जो उसकी एक न्यू फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं, तो सो दैट विल बी कॉल्ड एज द repositioning of the drugs. So now let's proceed toward the next slide. Now here there is I will discuss the some of the
purposes of the repositioning of the drugs, that what is the purposes of the repositionings. So here, as it is highlighted here, that the many pharmaceuticals companies are working on the development of new drugs, as you know well already, but the rate of gaining approval through clinical trial is very low compared to the financial and the time invested. So simple meaning है कि a lot of the pharmaceutical industry जो है वो एक न्यू ड्रग को मार्केट में रिलीज करने के लिए जो है वो सपोज कैंसर के लिए जो है अलॉट ऑफ फार्मा जो है वो काम कर रही है कि वो कैंसर्स के लिए जो कुछ मेडिकेशन जो है वो रिलीज करे, लेकिन इसमें दो मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या है, वो फाइनेंशियल, इसमें जो है अलॉट ऑफ द बिलियन ऑफ डॉलर रिक्वायर होती है, एंड द सेम मैनर इट्स टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 years. So these two things are the main problems in the drug discovery currently. In fact, it took 14 years for the drug through the de novo drug discovery processes. That is the one of the approach for the drug discovery, and it is under the category of the rational drug design. कि हम जो है एक ड्रग को जो है एक de novo drug design जो कि एक अप्रोच है उसके थ्रू जो है एक ड्रग मार्केट में रिलीज करते हैं. So approximately that take 14 years or the 10 to 15 years. Despite the prodigious increase in pharmaceuticals, research and development industry productivity has decreased in terms of the number of new drugs approved or the number of original investigational drug application from the commercial sources. इसमें जो है सिंपल ये है कि आलतू जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्री उसमें जो है अलॉट ऑफ द इंक्रीज है, इसमें जो है अलॉट ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट वो करते हैं, अलॉट ऑफ द जो है डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं जो डिफरेंट फार्मा से सपोज जो मल्टीनेशनल फार्मा है गेट्स है या सपोज जो अदर they are working for the discovery of the new drugs. उसकी जो है R&D डिपार्टमेंट प्रॉपरली फंक्शनल है, इसके अलावा जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज है. क्यों कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड द सेकंड इज इट इज द टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ द टाइम. सो a few drug released in the markets. So in response, interest in repurposing clinically approved drug has increased. इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अब जो नए अप्रोच है फॉर द रीपर्पसिंग ऑफ द ड्रग वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम अगर नॉर्मल वैसे जो है सपोज डीनो ड्रग डिस्कवरी से अगर कोई ड्रग जो है डिस्कवर करते हैं तो वो अलॉट ऑफ द टाइम लेता है. इसके अलावा जो है फिर उसकी जो फाइनेंशियल है उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है. सो वन ऑफ द अप्रोच टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज द repositioning or the repurposing of the drugs. Now, the drug repositioning is safe for human and preclinical models, and due to only testing a drug's effectiveness toward a specific disease, benefits from a very small burden of failures. क्योंकि जो repurposed ड्रग होता है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका होता है मार्केट में, सो उसके लिए फर्दर अलॉट ऑफ द प्री क्लिनिकल स्टडीज या इसके अलावा जो है क्लिनिकल स्टडीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. सिर्फ जो है हमें जो क्लिनिकल ट्रायल या जो क्लिनिकल स्टडीज है हमें की है उसकी जो है हम वो फाइल जो है वो सबमिट करते हैं FDA में, और फिर उसके बाद जो है उसकी कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. सो दैट्स व्हाई this is the one of the approach for the discovering the new drugs or developing the new indication, pharmacological indication of the already approved drug in the markets. So this is the new specifically reduced development risk has been achieved because in vitro and new screening, toxicology activities, the chemical optimization and formulation and development are already done and can be minimized. क्योंकि जो ड्रग ऑलरेडी जो है वो अप्रूव हो चुका है उसके लिए फर्दर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह की इन विट्रो न्यू स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में करके फिर जो है उसकी जो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी है वो भी उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वो अप्रूव हो चुका है. उसकी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है वगैरह में जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है, उधर उसकी जो रिपोर्ट्स है या जो कंक्लूजन्स है वो ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट है. And then chemical optimization, जिस तरह के different approach हम use करते हैं for the optimization, suppose जिस तरह जो drug design approach है वो हम use करते हैं, और initially we were using the term the one factor at a time approach हम use करते थे optimization के लिए, लेकिन करने जो software mostly use होती है that is the design expert
And then the formulation and development उसकी जो specific एक dosage form हम लेते हैं, suppose that will be the solid dosage form, liquid dosage form, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती ना. So ये जो different steps हैं उसको हम bypass करके जो है हम एक drug को जो है market उसकी new indication वो develop कर सकते हैं. That's why the repurposing के लिए जो है currently जो है approach वो ज़्यादा है. Thus the pharmaceutical companies and researchers have started to heavily invest in drug repositioning, which offer dramatic risk reward trade-off to the de novo drug discovery. So, लेकिन इसमें फिर main मसला ये है in the drug repositioning कि a lot of the pharmaceutical industry अब जो है वो repurposing करते हैं ना ड्रग की, क्योंकि इसमें जो है पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते, इसके अलावा जो है टाइम भी कम लेता है. So this is one of the biggest problem to the de novo drug discovery जो कि approach है, उसके लिए जो है a lot of the problems they create for the de novo drug discovery. लेकिन still हर एक ड्रग की जो है वो repositioning वगैरह नहीं हो सकती. जो already जो traditional way है for the discovery of the drug, that may be either the de novo drug discovery या जो other different approach है या rational drug design का जो approach है, the structure based activity or the ligand based activity, so that must be continued, that should be not discouraged. Now let's proceed toward the next slide. Now if we compare the de novo drug discovery approach and the drug repositioning और इसके जो different aspects हैं उसको हम discuss करें. So the first aspect would be the time. The de novo drug discovery एक ड्रग को जो है मार्केट में रिलीज करने के लिए approximately it takes 10 to 17 years, while repositioning में जो है हमें सिर्फ only 3 or maximally in rare cases it takes 12 years. The second, अगर हम जो है इस तरह जो है इन चीज़ों के बारे में फिर अगर हम compare करें, suppose जो different aspects हैं, so and then the repositioning approach has a lot of the benefits like the target discovery. इस तरह हम जो initial step में जो है अगर कोई भी ड्रग है हम वो discover करते हैं, so the first step is the target identification and then the validation. Target वो एक receptor भी हो सकता है, enzyme हो सकता है, या इवन हार्मोन्स भी उसकी एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, वो हमारा जो है वो जो ड्रग डिस्कवरी है उसमें जो है एक इनिशिएटिव हो सकता है. सो यहाँ पर जो है हमें टारगेट ड्रग डिस्कवरी या इवन टारगेट की आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन या डिस्कवरी में जो है हमें 2 to 3 ईयर लग सकते हैं, वाइल इन दी ड्रग रीपोजिशनिंग इसमें जो हम सिंपली हम जो एक कंपाउंड जो उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सपोज एक ड्रग है उसकी जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं प्रॉपर्ली, एंड इट टेक्स ओनली 1 to 1.5 years. अगर हम जो दूसरा अप्रोच है वो डिस्कस करें, दैट इज द डिस्कवरी एंड द स्क्रीनिंग. फिर जो जिस तरह जो ट्रेडिशनल वे इन द ड्रग डिस्कवरी जिसमें हम एक टारगेट की आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन करते हैं थ्रू द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और फिर उसमें जो है फर्दर उसकी लीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इवन डिफरेंट जो स्क्रीनिंग करते हैं, दैट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 year. लेकिन यहाँ पर हमें जो है सिर्फ कंपाउंड की एक्विजिशन की जरूरत होती है एंड दैट टेक्स 0 to 1.5 year. Yeah, the next step is the lead optimization in the traditional way. लेकिन यहाँ पर जो है हमें डायरेक्टली जो है उसकी प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट जो है या फर्दर जो प्री क्लिनिकल स्टडीज है वो परफॉर्म करते हैं. For what purposes? To avoid the toxicity. And then फिर जो है हम प्री क्लिनिकल स्टडीज करते हैं और यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं इन द ह्यूमंस. एंड देन यहाँ पर जो है हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं जो कि 5 to 6 year लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम उसकी फर्दर फिर ड्रग की लाइसेंसिंग रिक्वायर होती है टू रिलीज द ड्रग इनटू द मार्केट. और इसमें जो है अगर एक सिंपल मैनर में हम डिस्कस करें दैट द ड्रग रिपर्पसिंग और द रिपोजिशनिंग इज 2-3 steps ahead from the traditional way of the drug discovery. Like, and once again, I will mention here that the traditional ways are the rational drug design approach for the discovery of the new pharmaceutical entity should not be discouraged, because that is the actual and the right way to release the drugs from the initial stages to the final stages. And that is the only approved way. So now let's proceed toward the
Next slide. So there are some of the benefits of the drug repositioning. The first one, just like already we discussed, that is the saving times. The duration of the discovery phases for a repurposed drug is shorter, as safety and toxicology study have already assessed in the original indication. So simple mean ये कि इसमें जो है हम we save the time क्योंकि उस drug की already safety and toxicological studies हमने पहले perform किए. So here, in rare cases, we perform this study again for the repositioning of the drugs. The second important benefits is the saving the cost or the money. It costs approximately 300 US million dollars to bring a repurposed drug to the market, representing a saving of about 85% compared to the 2.6 billion dollar for a new drug if the cost of failed project is taken into account. So simple अगर हम इस तरह यहाँ पर जो उसने कंपैरिजन की है कि एक ड्रग्स है जो हम उसकी रिपर्पसिंग करते हैं तो उसमें जो अप्रॉक्सीमेटली उसके लिए $3 million जो है वो रिक्वायर होते हैं लेकिन डिनो ड्रग डिस्कवरी के थ्रू जो है आप सपोज एक ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए $2.6 billion रिक्वायर होते हैं और इसमें जो है फिर रिस्क की चांस होती है मीन there is the risk that maybe the discovery of the drug is failed. So this is the actual and this is the right comparison between the repurposing and the de novo drug discovery. Drug repositioning holds a higher reward with a lower risk. The main चीज जो है repurposing में वो क्या है इसकी reward ज़्यादा है and risk कम है. So that's why a lot of the pharma industry are now focusing on the repurposing of the drugs. And this is the diagrammatic representation in which in the y-axis it is the rewards in terms of the time saving and money saving, while in the x-axis there is the risk chances. तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें the drug repositioning इसके जो risk के chances वो भी कम है इसके अलावा जो है वो जो money saving है वो भी ज़्यादा है as compared to the traditional drug discovery. The risk reward diagram to compare the repurposing or the repositioning and the traditional ways of the drug development strategies. Simple mean ये कि जो repositioning है वो more economically भी ठीक है इसके अलावा जो है उसके लिए जो है further जो time require होता है वो भी कम require होता है as compared to the other ways of the drug discoveries. Again, once again, the other ways should be not discouraged. Now, this is the some of the strategies that are used for the repositioning of the drugs. So mainly two strategies are used. One is the on-target approach, and the other is the off-target approach. So on-target में इस तरह होता है कि एक drug है जो कि already market में prove हो चुका है वो उसकी drugs है फिर उस specific receptor से suppose bind करता है. Once again अगर हम यहाँ पर discuss करें suppose S2 blockers है जिस तरह हमने captopril है suppose that binds to the S2 receptor, that is the angiotensin converting enzyme to receptors. So it will bind, captopril will bind to the its receptor S2 and its therapeutic indication क्या होगी non-therapeutic indication. Suppose अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें एग्जांपल लेते हैं captopril की, so it will decrease the hypertension and और on target में जो है हम मेन जो मेन स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि एक ड्रग होता है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसके बाद जो उसकी नॉन थेराप्यूटिक इंडिकेशन है जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि कैप्टोप्रिल है वो रिसेप्टर से बाइंड होकर हाइपरटेंशन को डिक्रीज करता है या सपोज बीपी के लिए हम यूज करते हैं दिस इज द नॉन इंडिकेशन और इसकी रिपर्पसिंग क्या होगी आइडेंटिफाइंग द न्यू थेराप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ सच ड्रग्स. So that would be the repurposing. So this is the on-target approach. इसमें जो है हम एक ड्रग लेते हैं उसकी एक रिसेप्टर से वो बाइंड होता है फिर उसकी एक नॉन थेराप्यूटिक इंडिकेशन होती है लेकिन हम उसमें फिर एक नया जो इंडिकेशन है वो ऐड करते हैं उसकी एक न्यू थेराप्यूटिक इंडिकेशन हम ऐड करते हैं. So that is the repurposing और इस स्ट्रेटजीज को हम क्या कहते हैं that is the on-target approach. While off-target approach में क्या होता है इसमें एक ड्रग होता है वो एक रिसेप्टर से बाइंड करता है और जो ऑलरेडी नॉन इंडिकेशन है वो हमें देता है. सपोज यहाँ पर अगेन मैं एग्जांपल लूँ कि सपोज मिनॉक्सिडिल है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है और फिर आर्टरी वेनोडाइलेशन करता है और फिर हाइपरटेंशन इनिशियली इट वाज यूज्ड इन हाइपरटेंशन
लेकिन यहाँ पर जो है रिपर्पसिंग के लिए ये स्ट्रेटजी इसे आप टारगेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम एक न्यू टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं जिससे वो ड्रग बाइंड होता है और फिर वो एक न्यू इंडिकेशन देता है. सो दिस इज द रिपर्पसिंग. तो सिंपल मीन ये है कि एक ऑन टारगेट अप्रोच होता है और एक ऑफ टारगेट अप्रोच है. ऑन टारगेट ये होता है कि एक ड्रग होता है जो एक रिसेप्टर से बाइंड होकर वो इसकी एक नॉन इंडिकेशन होती है और फिर वो सेम ड्रग्स वो एक उस सेम रिसेप्टर से बाइंड होकर हम उसकी एक न्यू इंडिकेशन वो आइडेंटिफाई करते हैं. सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड इज द ऑन टारगेट अप्रोच. व्हाइल ऑफ टारगेट में जो है वो एक ड्रग एक नॉन रिसेप्टर से तो बाइंड होता था लेकिन हमने जो है कुछ और रिसेप्टर आइडेंटिफाई किए जिससे वो ड्रग बाइंड होकर वो एक न्यू इंडिकेशन हमें देता है. सो दैट अप्रोच विल बी कॉल्ड और दिस स्ट्रेटजी विल बी कॉल्ड इज द ऑफ टारगेट अप्रोच for the repurposing of the drugs. Now let's proceed toward the next slide. So these are the comparison approaches of the drug repositionings. So the one approach is the activity-based approach and the other one is the in silico-based approach. अगर इसके कुछ points हम discuss करें तो experimental जो है उसमें जो है in vitro and new screening हम करते हैं. जो ये अप्रोच है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है फॉर द रिपर्पसिंग ऑफ द ड्रग्स. व्हाइल इन द इन सिलिको बेस्ड अप्रोच इसमें जो है मोस्टली हम कंप्यूटर बेस्ड स्टडी करते हैं जिस तरह की डेटाबेस डेटा माइनिंग या इवन जो अदर जो डिफरेंट मॉडर्न वेज है कंप्यूटर यूज करके हम जो है उसकी जो डिफरेंट स्टडीज है वो परफॉर्म करते हैं. सो दैट विल बी कॉल्ड इज द इन सिलिको बेस्ड अप्रोच. यहाँ पर हम जो है कंप्यूटेशनल या वर्चुअल स्क्रीनिंग करते हैं. The next is the target based and still organism based screening हम करते हैं या activity based approach में. while यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है प्रोटीन टारगेट बेस्ड. सिंपल मीन ये है कि एक ड्रग है वो एक रिसेप्टर से बाइंड होकर उसकी फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज है जो डिफरेंट एक्टिविटी वो शो करता है हम वो स्पेस में स्टडी करते हैं. एंड देन इट रिक्वायर्स नो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन. इसमें जो टारगेट प्रोटीन है या जो रिसेप्टर्स है उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर नहीं होती एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में. लेकिन यहाँ पर जो है structure information regarding the target वो require होती है. that may be either the enzyme receptors or the ion chain. ये जो है time and labor consuming एक approach है for the repurposing और ये जो है time and labor efficient are the same approach है. फिर at the last but not the least it is the lower rate of the false positive hits during the screening. जो screening या जो studies हम करते हैं उसमें जो है false positive की जो रेट है वो that is too low. while here it is इसकी जो false positive की जो रेट है वो कुछ ज़्यादा है as compared to the activity based approach. So जिस तरह हमने डिस्कस किया कि different approaches होते हैं. So one approach was the off and on target approach. The next one was the activity based and the in silico based approach for the repositioning of the drugs. Then the most important section of this lecture is the examples on the repositioning drugs. हम तो ये कह रहे हैं कि एक ड्रग है जो कि ऑलरेडी मार्केट में प्रूव हो चुका है और फिर जो है उसकी एक न्यू थेराप्यूटिक इंडिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन क्या उसके कुछ एग्जांपल्स भी है या नहीं. सो वी विल टेक द एग्जांपल हियर. So it is the here some of the examples of the drugs are the given like the if we take the first example that is the duloxetine. That is the a class of the drugs called the SNRI, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. It was initially used for the depression. जिस तरह कि हमें पता है कि डिप्रेशन की डिफरेंट अदर इंडिकेशन भी यूज होती है जो कि TCA सपोज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, SSRI है, सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, फिर जो है SNRI जिस तरह की एक एग्जांपल इसमें ये भी है. So duloxetine was initially used for the depression, but nowadays it is also used for the chronic musculoskeletal pain as well. इस तरह जो है the second example and the most important example जो कि commonly use भी हो रहा है current scenario में minoxidil है जो कि arteriovasodilator है. लेकिन initially हम ये hypertension के लिए use करते थे, लेकिन nowadays it is used and it is repurposed for what? For the hair loss or for the alopecia. That is the male pattern baldness, even maybe in some rare cases it can occur in the female as well.
इस तरह जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल अगेन यहाँ पर है सेल डिनाफिल, जो कि इनिशियली एंजाइना पेक्टोरिस के लिए यूज हो रहा था, ताकि जो एंजाइना के पेशेंट्स हैं, जो कि पेन होता है उसमें सडन पेन होता है, दैट मे बी आइदर स्टेबल एंजाइना और द अनस्टेबल एंजाइना, उसके लिए इनिशियली सेल डिनाफिल यूज हो रहा था। उसकी जो क्लास है वो दिस इज द फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। लेकिन नाउअडेज ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, इसके लिए भी हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो है वो कार्पस के और नसम है पेनिस की, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक हो जाती है, और उसकी श्रिंकेज की वजह से प्रॉपर ब्लड वहाँ पर नहीं आती, इसलिए जो इरेक्शन है पेनिस की उसमें जो फिर प्रॉब्लम होती है। सो सेल्डेनाफिल हम यूज़ करते हैं ताकि ये फास्फोडाइस्टरेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करके जो CGMP एक पाथवे है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है, उसको उसकी कन्वर्जन को इनहिबिट करता है। फिर जो है वहाँ पर जो कार्पस के ऑर्निसोम जो कि मसल्स है पेनिस की, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है उसकी डायलेशन होते हैं, और a lot of the blood come there and then the penis erect. So by the way, this is one of the repurposed drug as well. Initially it was used for the sildenafil was used for angina, but nowadays it is used for the erectile dysfunction as well for the pulmonary hypertension. And the most important one, the thalidomide, जो कि 1962 में इसने ट्रेजेडी काज की थी, that was the fucomelia. लेकिन nowadays ये initially it was used for the morning sickness, लेकिन nowadays ये हम जो autoimmune disease उसमें यूज करते हैं, suppose leprosy जो कि एक बैक्टीरिया काज करती है, हम उसमें जो यूज करते हैं। इस तरह जो एंटी फंगल ड्रग्स है, एम्फोटेरिसिन बी जो कि हाईली नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी को डैमेज करता है, ये इनिशियली फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज हो रहा था, लेकिन नाउअडेज हम ये लिशमीनिया के लिए भी यूज करते हैं, जिस तरह की एक वन ऑफ द डिजीज कंडीशन है जो कि जहाँ पर जो जंग वगैरह होते हैं वहाँ पर ये कॉमन होती है, और एक इंसेक्ट जो है उसे काज करता है, जिस तरह की लिशमीनिया बुलवानी है, लिशमीनिया ट्रॉपिकाना है। And the carrier of this disease is the, by the way, one of the sandfly. I forgot the name, but this is there is a sandfly that transmits different causing agent of this leishmania, and that may be either the leishmania dunwani or others. So amphotericin B was initially used for the fungal infection, but now we can also use it for the leishmania as well. इस तरह जो एमाइट्रिडीन है जो कि इनिशियली हम इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ कर रहे थे, जो कि हम इनिशियल जो डिफरेंट वायरस जब एक सेल में अटैक करता है, फिर जो डिफरेंट स्टेज होता है कि एडहेजन होता है, उसके बाद जो है पेनिट्रेशन होती है, इसके बाद जो है वो अर्ली प्रोटीन लेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड लास्ट वो फिर बडिंग करता है, बाद सेल में जो है रिड्यूस होता है। सो अर्ली स्टेप जो इनहिबिट करता था वो एमाइट्रिडीन था। So initially it was used for the influenza infection, as you know, influenza can be A, B, etc. But nowadays we can also use for the Parkinson disease, जो कि एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। इसके तीन मेन फीचर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है, ट्रेमर होती है, हाइपोकाइनेसिया होता है, और अदर ड्रग्स भी हम जो है पार्किंसन में यूज कर सकते हैं, एज यू नो कि इसमें जो है डोपामिन की लेवल कम हो जाती है, और फिर जो है अलॉट ऑफ द ट्रबल्स होती है पेशेंट्स को। इस तरह अदर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज द ब्रोमोक्रिप्टीन। Bromocriptine was initially used for the Parkinson disease, but nowadays it is used for the diabetes mellitus. इस तरह जो bromocriptine है ये I think जो a lot of the secretion होती है in the from the breast, उसके लिए भी for the कंडीशन होती है मेरे ख्याल में, I think so के मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हम ब्रोमोक्रिप्टीन यूज कर सकते हैं। इस तरह जो है एज़ाथाइफ्रिन जो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है। Initially it was used for the rheumatoid arthritis, but nowadays we can also use it for the renal transplant to reject the transplant rejection. इस तरह जो retinoic acid है, initially it was used for the acne, that is the topical condition, but it is repurposed now for the promyelocytic leukemia, that is a type of the blood cancers. So ये तो कुछ different examples थे famous one हम अगर डिस्कस करें, मैंने एक्चुअली इनिशियली हाइपरटेंशन के लिए यूज करा था, लेकिन अब हम हेयर लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। सिल्डेनाफिल था वो एंजाइना के लिए यूज हो रहा था, लेकिन अब हमने रिपर्पस किया फॉरवर्ड फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, थैलिडोमाइड
अब जो है हमें उसे डिफरेंट जो इम्यून डिजीज है उसमें हम यूज़ करते हैं। एम्फोटेरिसिन बी फंगल एंटी फंगल ड्रग्स है, लेकिन हम उसे लिशमीने में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एमाट्रोडीन है वो इन्फ्लुएंजा में यूज़ हो रहा था, लेकिन करंटली हम इसे पार्किंसन डिजीज में यूज़ कर सकते हैं। ब्रोमोक्रिप्टीन था, पार्किंसन में यूज़ हो रहा था, लेकिन हम इसे अब हम डायबिटीज मेलाइटिस जो कि एक क्रानिक डिजीज है उसमें हम यूज़ करते हैं। इस तरह फ्रेम जो है, इस तरह अलग एग्जाम्पल्स है ना। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ड्रग्स जो है वो अंडर द क्लिनिकल ट्रायल्स है एंड दैट आर यूज्ड फॉर द रिपोजिशनिंग और द रिपर्पसिंग। What are the examples of that? So the first one is the metformin, जो कि one of the common the first line therapy for the initially diagnosed diabetes mellitus. जब initially diagnosed होता है diabetes mellitus, so the first choice for that is the metformin, that is the biguanides. So biguanides original indication किसके लिए हम यूज कर रहे थे? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए हम यूज कर रहे थे, जो कि ओरल ड्रग्स है, oral hypoglycemics है। एंड दी न्यू इंडिकेशन हम मेटफॉर्मिन किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और स्टडी किसके लिए कर रहे हैं? प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जो कि एक टर्म यूज करते हैं मेडिकल में इसके लिए, दैट इज द बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जब होता है तो उसके लिए हम ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल रेंडमाइज्ड स्टडी में फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। इस तरह the other example is the exenatide, it is also the oral hypoglycemic drugs. It is was initially used for the type 2 diabetes mellitus, and it's actually class is drug की कौन सी है? This is the mimetics, incretin mimetics, जो कि एक सब्सटेंस होता है स्टमक में रिलीज होता है या जीआईटी में रिलीज होता है, वो फिर जो है जो डिफरेंट ग्लूकोज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी फर्क जब एबनॉर्मलिटीज होती है उसमें फिर एक्जिनाटाइड जो कि एक ड्रग्स है वो यूज़ करते हैं। लेकिन नाउअडेज ये हम पार्किंसन डिजीज के लिए उसकी रिपर्पसिंग करते हैं, और इसकी जो है a larger phase 3 placebo controlled and 96 week clinical trial इसकी चल रही है फॉर दी पार्किंसन डिजीज। इस तरह जो ट्राइमेक है ये इसमें जो है फर्दर 3 ड्रग्स है, डोलोटेग्राविर है, एबाकाविर है एंड लेमिविडीन है, जो कि हम these are the different drugs. Actually it is the NNRTI, उसकी क्लास कौन सी है? एड्स के लिए जो डिफरेंट मेडिकेशन हम यूज करते हैं, that is the न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। जिस तरह के डोलोटेग्राविर है, एबाकाविर है या लेमिविडीन है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है जो कि HIV हम यूज करते हैं, लेकिन नाउअडेज ये हम जो एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो कि एक कंडीशन है इसमें हम यूज करते हैं, एंड इट इज अंडर द क्लिनिकल ट्रायल्स। इस तरह जो नल्फिनाविर है जो कि आल्सो द सेम कैटेगरीज के ड्रग है जो कि एड्स के लिए हम यूज करते हैं, उसकी क्लास कौन सी है नल्फिनाविर की? ये NRTI न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज inhibitor है। By the way, this is also the NRTI, the nucleoside reverse transcriptase inhibitors, and this is also the NRTI, that is the nucleoside reverse transcriptase inhibitor. इसमें जो लेमिविडीन है ये हम हेपेटाइटिस सी के लिए भी यूज करते हैं। इस तरह जो नल्फिनाविर है, मेजॉरिटी ऑफ द NRTI जो वो हम हेपेटाइटिस सी में भी यूज कर सकते हैं। So it is was used initially for the multiple cancers, but nowadays it was nalfenavir was used for the AIDS, but now it is under the clinical trial for what? For the multiple cancer. So now let's proceed to the next slide, and the next slide, by the way, is the thank you. So thank you for your time. If you have any questions or any suggestion, you can give that in the comment section. And thank you, and don't forget to subscribe and share with your friends, and then use this type of the topics, and also like the video as well. Thank you.